Good evening to all of you. Now is this audible, visible, all clear? Sorry for the slight delay. Very good evening to all of you. All clear, audible, visible, सुनी पार्चन समस्ते ठीक अछि, all clear. To see आज गोटे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करी ता सहित आ गोटे बहुत बढ़िया इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन भी शेयर करी समस्त सहित. सतीश ऑल क्लियर ठीक अछि, समस्त जॉइन कले, एवरीवन जॉइन करी गले समस्ते. मत हमर जो इवनिंग 9 PM रो सेशन चली ये सेशन रो रेस्पॉन्स कोन केमती लागुची बुझी पारुचंती, एग्जाम पई हेल्पफुल होउची कि नहीं जहां भी हमें पढुचे. नी पेन यस यस नी पेन पई मु सकाळ क्लास ऑप्शनल क्लास नहीं हलानी आज चिड़ाई की पढ़े की टिके आंठू पेन होतला तो मॉर्निंग ऑप्शनल क्लास आज मु कैंसिल कर देथिली. इनफैक्ट एथिक्स क्लास हमर हेतिला इवनिंग रे एबे क्लास भी कैंसिल हेनी अछि. ठीक अछि, नाउ फीलिंग गुड. पूरा टॉप नोच क्लास बहुत बढ़िया. ता सहित आउरी गोटे बहुत बढ़िया बेनिफिट मु आपण मानक सहित शेयर करिवि. बहुत बढ़िया ऑप्शन ने शेयर करिवि. वर्ता जहां पढुचे आमे जानिबा केमते एबे ठीक पढुचे कि नहीं, जहां पढुचे सेतिर हमर किछि इंप्रूवमेंट इंक्रीमेंट डेवलपमेंट होउची कि नहीं हमें केमते जानिबा. टेस्ट देले जानिबा ओसीएस प्रीलिम्स पई हां कि नहीं कोन कहली टेस्ट देले जानिबा या तो ओसीएस प्रीलिम्स एग्जाम पई जदि हम किछि मॉक टेस्ट दोचे ताहले जानिबा. अदरवाइज स्टैंडर्ड केमते जानिबा जहां पढुचे सब हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटी सब तो इंक्लूडिंग योर सीसार्ट पेपर. तो ये सबू को नेकी गोटे टेस्ट सीरीज होगा जाउछि पीडब्ल्यू प्लेटफॉर्म रे. अगेन इट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. समस्ते फ्री बैच को जाई परिबे. साधन फ्री बैच, ये फ्री बैच आपण एप्लीकेशन भीतर पाइबे. पीडब्ल्यू एप्लीकेशन भीतर को जानदु सेठी साधन फ्री बैच को सब्सक्राइब करिवे कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट. एथिरे आपण टेस्ट देई परिबे. कोन कहली एथिरे टेस्ट देई परिबे. ये बैच कंप्लीटली फ्री ऑलरेडी कहली. तो एथिरे जीएस आउ सीसैट दीटा जाक पेपर रा टेस्ट देबे. जेमती आपण टेस्ट दोचन ना प्रीलिम्स रे, ओसीएस प्रीलिम्स पई जेमती टेस्ट दोचन एग्जैक्टली सेमती हैला. ओसीएस प्रीलिम्स पई जेमती परीक्षा दोचन एग्जैक्टली सेमती प्रीलिम्स पई आपण जीएस आउ सीसैट दीटा जाक पेपर रा टेस्ट दे परिबे. बुझ पाले. सो टेस्ट सेक्शन को जिबे. टेस्ट सेक्शन को जिबा परे ऑल टेस्ट रे क्लिक करिवे. सो टेस्ट रो लिंक मिल जो. ये टेस्ट अछि 29 जून 29 जून ने टेस्ट अछि. कोन कहले 29 जून ने टेस्ट अछि. एवं जो मानकर परफॉर्मेंस अनुसार मध्ये बहुत भलो भलो से माने सर्व सक्षम बैच हमर जोटा चाली छि सर्व सक्षम 2.0 से बैच को भी जॉइन करि परिवे डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस. बुझी पाले. सो 29 जून ना टेस्ट को माने अटेंड करछन. जीएस सीसैट सबु रहिबो सेतरे टू स्ट्रेंथन योर प्रिपरेशन. टू स्ट्रेंथन योर प्रिपरेशन कोंतु
ठीक अच्छे। सो जहाँ पढ़ुचे यही टाइप क्वेश्चन आसो ओसीएस लेवल क्वेश्चन आसो समस्त ये टेस्ट दिंतु मुझे एडवाइज करी एवं जो मैंने टॉप परफॉर्मर रहे से सर्व सक्षम 2.0 बैच से फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब करें या भल बेनिफिट या भल इनफॉरमेशन कौन मिल पार कह या बेटर इनफॉरमेशन कौन दरकार कह चलो ठीक अच्छे। तो बुझीपारे समस्ते पीडब्ल्यू एप्लिकेशन जी एप्लिकेशन ने सब्सक्राइब करदे ओपीएससी साधारण फ्री स्टडी मटेरियल बैच ए ऑल टेस्ट को जी ऑल टेस्ट आप 29 टेस्ट दे पारे एवं भल परफॉर्मेंस करने को चेष्टा करेंगे जहाँ जहाँ पढ़ुचे सेम कॉन्सेप्ट को यूज कर आंसर करने को चेष्टा करेंगे। यस ओपीएससी बेसिक्स और फाउंडेशन कोर्स कंप्लीटली अवेलेबल अच्छी सर्व सक्षम 2.0 सर्व सक्षम 2.0 जो माने ये टेस्ट रे भल परफॉर्मेंस करेंगे से फ्री ऑफ कॉस्ट रे पाई से टेस्ट सर्व सक्षम 2.0 सब्सक्राइब करें। चलो ठीक अच्छे किसी क्वेश्चन डिपेंडिंग ऑन द लास्ट क्लास ये टेस्ट ऊपर आउरी अधिक इनफॉरमेशन आपको मिल जाव मुझे खाली जनइली कि 29 रे आमर टेस्ट अच्छे से अनुसार प्रिपेयर हूँ बस 29 तारीख पर समस्ते प्रिपेयर हूँ एटी आप टेस्ट देवे बोथ जीएस एंड सीसैट दीटा जाक पेपर देवे तो से अनुसार प्रिपेयर हूँ टाइम अच्छी एवं भी पाखापाखि 10 दिन तो 10 डेज बहुत भल भाव प्रिपेयर कर ठीक अच्छे। लास्ट क्लास मिस कर दियो सतीश नो प्रॉब्लम किसी गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक में भी डिस्कशन चली आमर तो आज क्लास कंटिन्यू करवा आम आज प्लानिंग एवं नीति आयोग उपर डिस्कशन अच्छी बहुत इंपोर्टेंट सेशन गोटे ये बहुत प्लानिंग उपर आम अल्प बहुत पूर्व डिस्कस करें नीति आयोग उपर आज आहरी इंपोर्टेंट इनफॉरमेशन शेयर करी समस्त सहित ये प्रिलिम्स मेन्स दीटा इंपोर्टेंट तो ये वीक रे हमर क्लास कंटिन्यू रहइबो नेक्स्ट वीक पर्यंत भी कंटिन्यू रहइबो माने डिपेंडिंग ऑन योर इंटरेस्ट एंड डिमांड ठीक अछि। सो लास्ट क्लास रे हमें कोन पढ़थिले गत कालीर क्लास रे व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन इन लास्ट क्लास कोन थिला कैन एनीवन रिकॉल फॉरेन ट्रेड ना कोन पढ़थिले कैपिटल मार्केट बोधे लास्ट क्लास हमें देखिथिले कैपिटल मार्केट देखो एते इंपोर्टेंट कांसेप्ट्स लाइक मनी मार्केट कैपिटल मार्केट टैक्सेशन सिस्टम ये सब बुझे सारछ तो जो माने क्लास न करिसंती यार रिकॉर्डेड क्लास करि परिबे आज हमें देखिबा प्लानिंग इन इंडिया अलोंग विथ नीति आयोग प्लानिंग इन इंडिया एंड नीति आयोग ये गोटे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक ठीक अच्छे ना आगु को आगे पूर्व लुसी भी मिस कर नो प्रॉब्लम जो मैंने मिस कर मे भी जानी पारि नथिबे मिस हो जाइए ठीक अच्छे ताकू रिकवर करदे आउ थे पढ़ी रिकॉर्डेड सेशन तो अवेलेबल अच्छी यूट्यूब रे प्लेलिस्ट को जी प्लेलिस्ट इकोनॉमिक्स रो सब क्लास अवेलेबल अच्छी क्लास 1 रु आज पर्यंत जहाँ जहाँ क्लास अच्छे तो आज पर योर रिक्वायरमेंट से क्लास को करें जोटा मिस हो ठीक अच्छे। रेस्ट ऑफ द क्लास चली आज यूजुअल मॉर्निंग ऑप्शनल देन एथिक्स जहाँ चलिए तो सब चलছে ऑलराइट ताले ए टॉपिक ऊपर हम आजिरो डिस्कशन कन्फाइन करिवो ताले हम बुझिबा केतरा इंपोर्टेंट कांसेप्ट प्लानिंग को आसीबा मते कोन मु पढैतिले पूर्व प्लानिंग कोन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लानिंग कहले हम कोन बुझी लास्ट क्लास रे डिस्कशन होइतिला व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग अ प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें पढितिले ये स्टिल नाउ 12 क्लासेस देखो प्लानिंग रे हमें कौन पढ़ले व्हाट इज प्लानिंग एंड व्हाई प्लानिंग इज इंपोर्टेंट फॉर अस प्लानिंग हम पई इंपोर्टेंट कहीं अरे हाँ काली संकल्प गत काली बिजनेस साइकिल पढ़ाई एब्सोल्युटली करेक्ट थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन काली हमें बिजनेस साइकिल पढ़ी नहीं नॉट कैपिटल मार्केट गुड ता पूर्व क्लास रे कैपिटल मार्केट कवर करथि काली बिजनेस साइकिल पढ़ी ऑलराइट ठीक अछि एते गोटे क्लास भितर मु भी भूल जाइछि कि कोन क्लास थिला कोन टॉपिक थिला हमर एनीवे आज टॉपिक प्लान्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो प्लानिंग कहले हम कोन बुझो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग प्लानिंग कोन प्लानिंग रे हम करूथिले कोन प्लानिंग रे हम किछि इनपुट नौचे एवं से इनपुट नै कि हम कोन करछे ना एटी किछि आउटपुट बाहर करछे कोन कहले एटी प्लानिंग रे हम किछि इनपुट नौचे एवं इनपुट नै कि कोन करछे ना हम किछि आउटपुट बाहर करछे नहीं एती कथा तो प्लानिंग रो ऑब्जेक्टिव कोन प्लानिंग रो ऑब्जेक्टिव होची हम पाखरे जति रिसोर्स अछि हम बजट क्लास रे पढिथिले हम पाखरे जति रिसोर्स अछि से रिसोर्स रो प्रॉपर एलोकेशन
बा मु कहि से रिसोर्स रो प्रॉपर मोबिलाइजेशन कौन कहली सर रिसोर्स रिसोर्स कौन अगेन तुम सर व्हाट इज रिसोर्स रिसोर्स कौन रिसोर्स कहले कौन बुझे ना व्हिच कैन सैटिस्फाई योर ह्यूमन वांट व्हिच कैन सैटिस्फाई ह्यूमन वांट जे ह्यूमन वांट को सैटिस्फाई करि परिबो ताको रिसोर्स कहंती फॉर एग्जांपल आपनकर ट्रैवल करबा को इच्छा अछि यू हैव अ बाइक सो बाइक इज अ रिसोर्स फॉर यू आपनकर पाठ पढिबा को इच्छा अछि एंड यू हैव अ टीचर मु पढौची आपन सो आई एम अ रिसोर्स फॉर यू बट काली जदि मु पढै न पारे कोनोसी कारणरु इफ आई विल डिसेबल टू टीच देन आई विल नॉट बी अ रिसोर्स आपनकर पाखे थिया बाइक जदि काली खराब हो जाउची बाइक को यूज करि पारु नांती देन बाइक विल नॉट बी अ रिसोर्स फॉर यू तो जे पर्यंत आपण यूज करूछंती एवं सेतरु किछि बेनिफिट पाउछंती ह्यूमन वांट को सैटिस्फाई करि पारुछंती यदि कोनोसी ऑब्जेक्ट को यूज करके दैट इज अ रिसोर्स फॉर यू बुझ पाले रिसोर्स कोन सो रिसोर्स एटी हम देखिले दरकार कोन हमको ना व्हाट वी नीड रिसोर्स एलोकेशन एंड मोबिलाइजेशन व्हाई काहे कि मु कहबी लेट्स से तुम पाकर 1000 टंका अछि एंड 1000 टंका यू हैव सो मेनी वांट्स कि चाहू जे मु मूवी देखिबा को जीवी नुवा मूवी आछि रजरे चाहू जे मु रेस्टोरेंट जीवी बुक किनिबी फॉर्म पकेबी ड्रेस किनिबी तो एते जिंस तो करि होनी 1000 टंका रे सो यू हैव टू अलोकेट कि एतिके टंका एतिकेला मोर बजेट मूवी पई एतिकेला मोर बजेट कोन पई मोर लेट्स से ड्रेस किनिबा पई एतिके होची मोर बजेट रेस्टोरेंट जीवा पई नो आज पर द बजेट अपन एटी अलोकेशन कर दे सो एई बजेट रे मु एया करि एक्जेक्टली सेम थिंग हैपेंस इन केस ऑफ एन इकोनॉमी you have several sectors you have defense you have police you have pension you have internal security external security रास्ता घाट पानी बिजुली एते सब कोन टंका नहीं एते सब जिंस अछि सो एते सब जिंस कहार ऑब्जेक्टिव कहार फंक्शन एंड दिस इज फंक्शन ऑफ द स्टेट now so state in this case has to discharge its duty as a police state as well as welfare state कौन कहली ये गोटे पुलिस स्टेट एवं वेलफेयर स्टेट हिसाब रे यार ड्यूटी डिस्चार्ज करियो पुलिस स्टेट कौन ना तुमको प्रोटेक्शन दबो वेलफेयर स्टेट रे हमर डेवलपमेंट करियो कौन कहली पुलिस स्टेट रे प्रोटेक्शन दबो वेलफेयर स्टेट रे ये डेवलपमेंट करियो नाउ दिस इज फंक्शन ऑफ अ स्टेट दिस इज फंक्शन ऑफ अ स्टेट सो स्टेट रे एते फंक्शन अछि बट जदि हम देखिबा स्टेट रे इनकम लिमिटेड इनकम केते जन टैक्स दोछन गाँ रे रास्ता होउची स्कूल होउची कॉलेज होउची से स्कूल कॉलेज रास्ता को केते जन यूज करछन देखंतु निज गाँ रे एवं गाँ रे केते जन टैक्स दोछन सरकार को तमाने सरकार पाखरे इनकम कम एक्सपेंडिचर अधिक तो एटी बजेट डेफिसिट क्रिएट हुए बजेट डेफिसिट कोन हम पढि सारे बजेट क्लास रे पढिचे सो एटी देखिले हम कोन दरकार ताले तो व्हाटएवर द रिसोर्सेस लिमिटेड रिसोर्सेस वी हैव टू गो फॉर रिसोर्स एलोकेशन एंड मोबिलाइजेशन बुझी पाले मो कथा रिसोर्स एलोकेशन एवं मोबिलाइजेशन कोन एवं काहे के दरकार बुझी पारिले बुझी पाले समझते now बुझी गले त रिसोर्स एलोकेशन कोन प्लान इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोन now different types of planning ऊपर भी हम पढिचे पूर्व आई होप समस्त मन अछि 1934 विश्वेश्वराय प्लान आसला then 1934 FICCI proposal आसला 1938 कांग्रेस प्लान आसला 44 बॉम्बे प्लान गांधीयन प्लान पीपल्स प्लान प्लानिंग एडवाइजरी बोर्ड इकोनॉमिक प्रोग्राम कमिटी बुझेला इकोनॉमिक प्रोग्राम कमिटी सो ये सब आसला हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप these are different plans this is how we adopted in 1947 पर 50 आसला सर्वोदय प्लान प्लानिंग कमिशन आसला 1950 एनडीसी तापर 2015 रे फाइनली वी हैव द नीति आयोग सो नीति आयोग रो 3 ईयर एक्शन एजेंडा अछि 7 इयर्स एक्शन एजेंडा अछि 3 ईयर पई कोन प्लानिंग रहबा दरकार 7 इयर्स पई कोन प्लानिंग रहबा दरकार ये सब ऊपर फोकस करा जाउ बुझी पाले मो कथा तो लिखियो 1934 प्लान ने कोन हेतला कहा ऊपर फोकस करा गला एटी फोकस करा गला एम्फासिस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन शिफ्टिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियलाइजेशन
कहाँ शिफ्ट करागला ना फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियलाइजेशन तापर आसला लासेस फेयर अर्थ होची कोन नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट लेखिक रखन कोन गला ना स्टेट इंटरफेयर करबन नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट ना मते कोन प्लानिंग रे स्टेट इंटरफेरेंस इज रिक्वायर्ड और नॉट कोन कहली स्टेट इंटरफेरेंस इज इट रिक्वायर्ड मते कोन इज इट required is it required state interference दरकार ना दरकार नहीं laissez faire means non interference of the state laissez faire अर्थ होची कि पार्टिसिपेट करिवो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट करिवो laissez faire अर्थ कोन ना प्राइवेट सेक्टर विल पार्टिसिपेट नॉट दी स्टेट ताले हम दीटा सेक्टर देखिछे ना गत काल क्लास रे भी डिस्कशन होई प्रत्येक क्लास रे हम कहूची गोटेला के ना गोटेला स्टेट और यू कैन से गवर्नमेंट आउ गोटे कोन कहले आउ गोटेला प्राइवेट सेक्टर आउ गोटे के कहले आउ गोटेला प्राइवेट सेक्टर ना स्टेट कहा को फोकस करे कस्टमर को ना सिटीजन प्राइवेट सेक्टर कहा को फोकस करे कस्टमर को ना सिटीजन को ना स्टेट फोकस करे कहा को ना सिटीजन ऊपर ना प्राइवेट सेक्टर फोकस करे कहा पर ना कस्टमर ऊपर कहा ऊपर ये फोकस करे सिटीजन ऊपर और प्राइवेट सेक्टर फोकस करे कस्टमर ऊपर नाउ क्लियर प्राइवेट सेक्टर ऑब्जेक्टिव कोन कहितली तार मन अछि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कोन कहली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन स्टेट बा गवर्नमेंट रो ऑब्जेक्टिव कोन एटी ना सोशल वेलफेयर कोन कहली स्टेट बा गवर्नमेंट रो ऑब्जेक्टिव कोन सोशल वेलफेयर यार ऑब्जेक्टिव कोन ना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तले ये प्राइवेट सेक्टर दरकार कि हमको इकोनॉमी रे ना बिल्कुल दरकार नहीं डेफिनेटली दरकार वी आर इन इंडिया वी आर हैविंग अ मिक्स्ड इकोनॉमी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी कोन इन इंडिया कोन दरकार हमको ना वी आर हैविंग अ मिक्स्ड इकोनॉमी सो मिक्स्ड इकोनॉमी रे देयर इज प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर बोथ इंक्लूडेड मिक्स्ड इकोनॉमी रे कोन कहली गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दी जन जाक अछंदी बोथ एग्जिस्ट तुमको सर प्राइवेट सेक्टर काम कोन प्राइवेट सेक्टर काम होची ये जॉब क्रिएशन करिवो कोन कहली ये जॉब क्रिएशन करिवो बुझेला आउ कोन प्राइवेट सेक्टर काम जॉब क्रिएशन व्यतीत मते कोन प्राइवेट सेक्टर will make the goods and services available it will make goods and services available कोने करो it will make goods and services available बुझिला क्वेश्चन कोन सो ये जॉब क्रिएशन करिवो एवं it will make goods and services available ये goods और सर्विसेज को अवेलेबल भी करेबो के प्राइवेट सेक्टर न रहिले इन्फ्लेशन नहीं पारे प्रथम कथा अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं पारन कोन कहले अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं पारन स्टेट रो फंक्शन ना स्टेट विल लुक इनटू द सिटीजंस दोज स्पेशली दोज हु आर पोर ये कहां पर ना इट विल फोकस ऑन द रिच नाउ बुझे गेला सो फाइनली करंटली 2015 वी हैव नीति आयोग कोन कहले इन 2015 वी हैव नीति आयोग कौन कला ना नीति आयोग रिप्लेस कला प्लानिंग कमीशन नीति आयोग रिप्लेस कले काहा को ना नीति आयोग रिप्लेस कले प्लानिंग कमीशन सो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग रे कौन थिला हमें देखिले ना प्रोसेस ऑफ प्लानिंग को अचीव करिया पई वी नीड अ गोल देन रिसोर्स इज रिक्वायर्ड हां कि नहीं कौन दरकार हमको रिसोर्स हम पाखरे लिमिटेड सो वी नीड एलोकेशन ऑफ रिसोर्स तो हम कौन दरकार वी नीड एलोकेशन ऑफ रिसोर्स सो प्लानिंग इज अ प्रोसेस इन प्लानिंग देयर इज अ गोल एंड देयर इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्स है कौन कहले ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्स हम रिसोर्स अछि तार प्रॉपर यूटिलाइजेशन तार ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन एति त प्लानिंग हमें आणु छे कोन पई प्लानिंग इज रिक्वायर्ड फॉर सोशल जस्टिस कोन दिए की कहे मते व्हाट इज सोशल जस्टिस
सोशल जस्टिस मीन्स सोशल जस्टिस का पे सोशल जस्टिस इज फॉर द पोर सोशल जस्टिस इज फॉर द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को माने आसीबे एटी पोर रे तुमको सर बीपीएल वाला आसीबे कि नहीं ना हां आसीबे मार्जिनलाइज सेक्शन आसीबे कि नहीं एसटी एसटी ओबीसी आसीबे थर्ड जेंडर आसीबे कि आसीबे हला कोन कहली एससी एसटी ओबीसी आसीबे थर्ड जेंडर आसीबे एलजीबीटीक्यू आसीबे कोई हां आसीबे ओल्ड एज पर्सन आसीबे यस ओल्ड एज आसीबे चिल्ड्रन आसीबे आसीबे वुमेन आसीबे यस आसीबे हला ईडब्ल्यूएस आसीबे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आसीबे सो ये समस्त को कुआ जाए vulnerable section of society vulnerable sections of society मो कथा बुझेला तला हमको दरकार कोन ना हमको दरकार सोशल जस्टिस so what is the objective of planning planning needs social justice planning is required to ensure social justice कोन पय दरकार it is required to ensure social justice then for limitation of market mechanism कोन यार ऑब्जेक्टिव कोन ना यार ऑब्जेक्टिव होची प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यार ऑब्जेक्टिव कोन ना यार ऑब्जेक्टिव वाला प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव कोन यार ऑब्जेक्टिव वाला प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तमाने ये प्राइवेट मार्केट मैकेनिज्म कहा को फोकस करियो इट विल फोकस द रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कहा को ना इट विल फोकस ऑन द रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी नॉट द पोर सो ए लिमिटेशन को ओवरकम करिया पई हमको प्लानिंग दरकार प्लानिंग कहा पई ना प्लानिंग दरकार फॉर द पोर प्लानिंग दरकार कहा पई ना प्लानिंग रिक्वायर्ड फॉर द पोर टू एंश्योर सोशल जस्टिस टू रिक्वायर्ड इट इज रिक्वायर्ड फॉर रिसोर्स मोबिलाइजेशन चलो बुझी पाले मो कथा ताले प्लानिंग रा ऑब्जेक्टिव कोन हमें देखिबा टी एवं नीति आयोग ए रिलेटेड केमति हमको ग्रोथ करू हमें देखिबा ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग कोन इट इज रिक्वायर्ड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ कोन पई क्वांटिटेटिवली इकोनॉमिक ग्रोथ करिया पई फॉर मोर प्रोडक्शन this required to stimulate the economy economy को stimulate करिया पई मध्ये एटा दरकार इकोनॉमिक ग्रोथ सेल्फ रिलायंस अर्थ आत्मनिर्भरशीलता तो आमे जो एक्सपोर्ट सब्स्टिट्यूशन सॉरी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करिवा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन माने जो फॉरेन कंट्री में मगौते जिंस त कमे देवा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडिया रे हमें हमर प्रोडक्शन निजे करिवा ओन प्रोडक्शन यार अर्थ कोन यार अर्थ होची ओन प्रोडक्शन निजे प्रोडक्शन करिवा कोन को निजे प्रोडक्शन करिवा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करिवा रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्लानिंग कोन करिवो ना इट विल एंश्योर एम्प्लॉयमेंट एंश्योर करिवो पॉवर्टी एलिमिनेशन करिवो एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी कोन कहली एलिमिनेट पॉवर्टी रिड्यूस करिवो स्पेशली बीपीएल मानन को ट्रांसफर करके कोटी नबो ना ये नबो बीपीएल मानन को ट्रांसफर करके एफपीएल कोटी के एफपीएल को नबो देन रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटी जोड़ा अछि रिच और पोर भीतर जो गैप अछि रिच वर्सेस पोर ये जो डिवाइड अछि भाई जो गैप अछि ये कौन करो ना ये डिवाइड बाय गैप को रिड्यूस करियो ये डिवाइड बाय ये गैप को कौन करो ये ना रिड्यूस करियो बुझियला मो कथा बुझी पाले व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग इज दिस क्लियर यस ओके वेरी गुड तापर आगो जिबा काल जिबा नीति आयोग आसीबा ताल प्लानिंग कमिशन थिला हम पाखे हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग ऊपर हम डिस्कशन करिचे हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग ऊपर हम डिस्कशन करचे कॉस्ट प्लान इंपरेटिव इंडिकेटिव प्लानिंग पढैतिली एबा आछी मु नीति आयोग पर 5 ईयर प्लान भी डिस्कस्ड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सब गोटा डिस्कस होई ओडिसा रा अनेक गोटे स्कीम कहितिली नीति आयोग
नीति आयोग पई गोटे पॉइंट कहूँ समस्त मन रखिए थ्रू आउट योर लाइफ मन रखिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मन रख कौन कहली कोऑपरेटिव कौन कहली कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बुझीगला कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कौन और नीति आयोग रहिबे किए एटा कहबी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कौन आगो कहबी खाली मन प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन आर किए ना प्राइम मिनिस्टर ये सब पॉलिटी रे पढ़िथियो चेयरपर्सन किए कौन गवर्निंग काउंसिल किए रहबे ना चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी रीजनल काउंसिल रो ऑब्जेक्टिव कौन इट विल बी क्रिएटेड टू एड्रेस पर्टिकुलर इश्यू एंड पॉसिबिलिटीज अफेक्टिंग मोर देन वन स्टेट and these will be formed for a fixed term. It will be summoned by the Prime Minister. It will consist of the Chief Ministers of State and Lieutenant Governors of the Union Territory. एमएनएल Regional Council. मन रहेगा. ये दिटा important ऐसे question PM एवं Governing Council किए. Then special invite इसे किए. Eminent experts, specialist. जो मानकर domain knowledge अच्छी. कौन कहली? Experts and specialists जो मानकर domain knowledge अच्छी. सो फुल टाइम ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क रे की रहिले ताले कहली दी प्रकार लोक गोटे फुल टाइम गोटे पार्ट टाइम रे मैक्सिमम 2 जण कोठो ना एकेडमिया माने यूनिवर्सिटी कहले लीडिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस थिंक टैंक जेमति के एग्जांपल कोई विधि सेंटर ऑफ लीगल पॉलिसी सो लीडिंग रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक्स ऑफिशियल मेंबर मैक्सिमम 4 जण काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स विल बी अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर ये गले सब नीति आयोग मेंबर मान कथा तापर इंपोर्टेंट पाठ को आसीबा हमें व्हाट आर द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ नीति आयोग कौन कर इंपोर्टेंट पाठ को आसीबा व्हाट आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ नीति आयोग ए पर्यंत समस्त बुझिले कि नहीं कौन कहले ए पर्यंत समस्त बुझिला कि नहीं क्लियर फर्स्ट क्लास सस्मिता नो प्रॉब्लम बुझी पारिबो स्तर बुझिला बहुत बढ़िया नो प्रॉब्लम सस्मिता बुझी पारिबो ग्रेजुअली बट आगर जो 11 टा क्लास हिची ताको निजे डी कर दो आज 12th सेशन तापर हम देखियो व्हाट आर द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ नीति आयोग रो गाइडिंग प्रिंसिपल कोन फर्स्ट इज इंक्लूसिव ग्रोथ रो अर्थ कोन टू इंक्लूड एवरीवन कौन कहली टू इंक्लूड एवरीवन यार अर्थ कौन यार अर्थ होची ग्रोथ फॉर ऑल कौन कहली यार अर्थ होची टू इंक्लूड एवरीवन और ग्रोथ फॉर ऑल माने मते कोन जो ग्रोथ होची जो ग्रोथ प्रोसेस होची बा जीडीपी बढ़ुची बा कंट्री ग्रो करूची मते कोन इक्वली एटा कोन समस्त भीतर डिस्ट्रीब्यूटेड इज इट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ऑल कौन कहली इज इट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ऑल जीडीपी कौन युवराज पचार जीडीपी तो सेकंड क्लास रे पढ़े जीडीपी नेशनल इनकम सेकंड क्लास रे पढ़े सरी जाई आउ तो देखियो से क्लास न बुझ पाले पचारि बहुत बड़ कांसेप्ट नेशनल इनकम पढ़े देखियो नो इट इज नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल ताले को क्षेत्र में कोन करबो ना को टू इंक्लूड ईच एंड एवरीवन कोन कहूचे ना टू इंक्लूड ईच एंड एवरीवन बा को ग्रोथ फॉर ऑल स्पेशली को मानक पई ना for marginalized section of society मुझे लामो कथा marginalized section किए कौन कहली फॉर marginalized section किए हम कहबी एससी एसटी ओबीसी जो गुडा हम पढ़ी छ ऑलरेडी आगु ईडब्ल्यूएस वुमेन थर्ड जेंडर है ना ये सब एस्पेक्ट marginalized section तो ये कुछ समस्त को इंक्लूड कर डेवलपमेंट जहाँ होची से डेवलपमेंट रो फ्रूट समस्त पाखे पहुंच खाली कहीं धनी धनी जीव गरीब गरीब हाँ कि नहीं एक्चुअल डिस्क्रिमिनेशन कौन बर्तमान जब एक्चुअल डिस्क्रिमिनेशन देखिए को बेसिस रे डिस्क्रिमिनेशन हो इज इट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रिलीजन रीजन और इट इज ऑन द बेसिस ऑफ पोर एंड रिच रिलीजन जहाँ भी हो पोर हर्ट्स एवरीवन
poor people from all religions, they have to face difficulty to maintain their livelihood. यदि खाइबा को पैसा नहीं से को भी रिलीजन हो भोकर तो मूल्य समस्त सामान ना को भी जाति हो को भी कास्ट हो यदि सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी एब्सोल्यूट पॉवर्टी खाइबा को नहीं ताहले इरेस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट पॉवर्टी इज पॉवर्टी को भी रिलीजन हुंतु को भी रीजन हुंतु नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हुंतु को भी कास्ट हुंतु तो ये जो सब एते प्रकार डिवाइड एंड रूल किए करछि जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिशियंस to divide the Indian society जेतो ब्रिटिशर माने डिवाइड करथले इंडियन सोसाइटी डिवाइड एंड रूल प्ले करथले ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन पढिथिबे हिस्ट्री 1905 बेंगल पार्टीशन कोन पे हेतला बेंगल पार्टीशन ऑब्जेक्टिव ऑफ बेंगल पार्टीशन वाज टू separate or to create a line of separation among the Hindu and Muslim हिंदू मेजॉरिटी एरिया रे हिंदू को माइनॉरिटी करबा एवं मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया रे मुस्लिम को माइनॉरिटी करबा मानकर ऑब्जेक्टिव थिला सो याको कहे डिवाइड एंड रूल पॉलिटिक्स ब्रिटिशर माने एबे नहांती बट सेम ब्रिटिश लिगासी एबे भी इंडिया रे अवेलेबल अछि कोडी जाति बेसिस रे कास्ट बेसिस रे सोसाइटी को डिवाइड करा जाउची तो कोडी रिलीजन बेसिस रे डिवाइड करा जाउची तो कोडी रीजन बेसिस रे नॉर्थ इंडिया रे साउथ इंडियन मानको हरास करा जाउची साउथ इंडिया रे नॉर्थ इंडियन मानको हरास करा जाउची नॉर्थ ईस्ट इंडिया रे पीपल जो माने नॉर्थ ईस्टर्न पीपल से मानको मेनलैंड ऑफ इंडिया रे हरासमेंट रो शिकार होबा पड़ुची सो डिवाइड एंड रूल एक्जिस्ट डिवाइड करबा होची मानकर पॉलिटिशियन मानकर ऑब्जेक्टिव बट एठी हमें कोन देखली इंक्लूसिव ग्रोथ को टू इंक्लूड एवरीवन इन द मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जदि डेवलपमेंट करछन त समस्त को पाई करन देन व्हाट इज द एक्चुअल लाइन ऑफ डिमार्केशन मते कोन ये हिंदू वर्सेस मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियन ना पोर वर्सेस रिच ये अपर कास्ट वर्सेस लोअर कास्ट ना पोर वर्सेस रिच ये नॉर्थ इंडियन वर्सेस साउथ इंडियन ना पोर वर्सेस रिच नथिंग इज मोर पेनफुल देन पॉवर्टी nothing is more painful than poverty those who are suffering from absolute poverty they are deprived of article 21 right to life and personal liberty they are deprived of article 21 of the Indian constitution that is right to life and personal liberty सेवन पर right to education नहीं right to health नहीं right to internet नहीं right to shelter नहीं right for dignified life नहीं poor people they are not represented well poor पॉलिटिक्स रे पोर मानक रिप्रेजेंटेशन अछि कोन कहि पॉलिटिक्स रे पोर मानक रिप्रेजेंटेशन अछि मते कोन ताले पॉलिटिकल जस्टिस कोड गला पॉलिटिकल जस्टिस माने कोन जो जेतो कॉन्स्टिट्यूशन पढुचंदी प्रियाम्बल ले कोन लिखाई जस्टिस ओ जस्टिस ना सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस पढुचंदी ना सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस पढुचंदी ना एटा कोन सोशल जस्टिस माने इकोनॉमिक जस्टिस माने रिच वर्सेस पोर मते कोन पॉलिटिकल जस्टिस माने रिप्रेजेंटेशन समस्तंकर रिप्रेजेंटेशन मते कोन केतेटा पोर एमपी एमएलए होचंदी केतेटा पोर मंत्री होचंदी नेता ही परिबे जो माने बारे खाइबा को नहीं केवल को माने होचंदी जो माने मंत्री होचंदी एमपी होचंदी एमएलए होचंदी समान गोटे एसेट देखिबे समान का एसेट देखिबे गवर्नमेंट रो गोटे वेबसाइट अछि पळेबे आज समस्त क्लास पर myneta.gov.in गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो ये वेबसाइट कोन कहले myneta.gov.in को पळेबे वेबसाइट को आपन को रीजन पूरा भारत रो सब जगह एमपीएमएल मान कर एसेट देखि परिबे गवर्नमेंट पाखर थिबा डाटा अनुसार देखंतु समान कर एसेट केते कोटी टंगार अछि कोन सरे गवर्नमेंट डाटा अनुसार देखंतु तांगर एसेट केते अछि ता माने नॉन गवर्नमेंट डाटा अनुसार अनऑफिशियल समान को पाखर केते टंगा अछि एवरीवन नोस अनऑफिशियल से पाखे केते टंका समस्त जानिछन ताले एटी कोन होउची पॉलिटिशियन मानकर डेवलपमेंट होउची जो माने रिच सेक्शन से मानकर डेवलपमेंट होउची रिच गेटिंग रिचर पोर गेटिंग पोरर धनी माने अधिक धनी होउचंदी गरीब माने अधिक गरीब होउचंदी हां कि नहीं कोंदु धनी माने अधिक धनी एवं गरीब माने अधिक गरीब होउचंदी कि नहीं ताले वेयर इज जस्टिस कोडे गला प्रियामूल्य जस्टिस सोशल जस्टिस काई इकोनॉमिक जस्टिस काई पॉलिटिकल जस्टिस काई मते कोन नो जस्टिस ताले हमक दरकार कोन इंक्लूसिव डेवलपमेंट फॉर ऑल ग्रोथ फॉर ऑल नाउ इंक्लूसिव डेवलपमेंट न हले असुविधा कोन 1967 एग्जांपल नियंतु 1967 गा नक्सलबारी विलेज वेस्ट बेंगल एटी आरंभ होला कोन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म
चारू मजुमदार एवं कानू सन्याल लीडरशिप रे स्टार्ट हला लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का अंडर कहली चारू मजुमदार एवं कानू सन्याल तेमान अंडर तैयारी हला तांको लीडरशिप अंडर आसला लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जाको माओवादी बोली कहा जाउछ सो ये बेसिकली इट वाज अ स्ट्रगल बिटवीन द रिच एंड द पोर द जमींदार्स इन वन साइड लैंडलेस लेबरर्स इन अनदर साइड जो मान पर लैंड नाही जो मान मूलिया मजुरिया खटिका श्रमिक से माने गोट साइड कहले so this is the consequence of poverty नगड़ार शिशु मृत्यु नियंतु नगड़ार शिशु मृत्यु नियंतु ओडिसा रे केबिके रीजन रो कथा देखंतु लोक खाइबा को पाउनाते आंबो टाकुआ खाउचंदी आंबो टाकुआ खाउचंदी तापर से कोन फूड पॉइजनिंग होती विषाक्त खाद्य खाइबा कारण पीडीएस सिस्टम रे टन टन रो क्विंटल क्विंटल जिनस नष्ट होउची पीडीएस रे करप्शन पई लोकन पाखरे खाइबा को पहुंचुनी कोन को लोकन पाखरे खाइबा को पहुंचुनी पीडीएस माध्यम रे जो जिनस अछि सरकार सब नष्ट होउची करप्शन पई जेते वेलफेयर स्कीम आसुची बिकॉज ऑफ ऑफिसर मान करप्शन पई ता पाखरे पहुंच पड़नी साधारण लोक पाखरे पहुंच पड़नी गोटे गरीब लोक पाखरे पहुंच पड़ मिसयूज करतोनी को माने मिसयूज्ड बाय पॉलिटिशियंस मिसयूज्ड बाय ब्यूरोक्रेट्स बिकॉज ऑफ करप्शन तो ओडिसा रो अनेक गुडे जगह रे केमिते लोक माने असुविधा फेस करचंदी डेवलपमेंट एक्चुअली अछि कि नहीं ग्रोथ एक्चुअली अछि कि नहीं सरकार तो नारा दी अछि गरीबी हटाओ केबेटू इंडिपेंडेंस टू ही दे अछि गरीबी हटाओ आज पर्यंत गरीबी हटि पारन पॉवर्टी एग्जिस्ट कोन कहली पॉवर्टी एबे भी एग्जिस्ट करछ सो इंक्लूसिव डेवलपमेंट इज रिक्वायर्ड नेक्स्ट पॉइंट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट रो अर्थ कोन ना कीपिंग एन आई ऑन द एनवायरनमेंट कौन कहली कीपिंग एन आई ऑन एनवायरनमेंट लॉस न हो आमे फोकस कले कहां पर ना आमे कहले जीडीपी बढ़ी चलू खाली जीडीपी बढ़ू अर्थ प्रोडक्शन बढ़ू ता माने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ियो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ियो हां कि नहीं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़िले एनवायरनमेंट ऊपर इंपैक्ट पड़ियो कहीं ना बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग because of global warming because of greenhouse gas emission environmental damaging होबनी कोना दी greenhouse gas emission ले environment ऊपर impact पड़िबो कि नहीं फ्लड होबो कि नहीं ड्रॉट होबो कि नहीं मॉनसून लेट आसीबो कि नहीं एल निनो ला निनो बलिया इम्पैक्ट देखिया पड़िबो कि नहीं डेजर्टिफिकेशन बढ़िबो कि नहीं so there are different type of natural calamities associated to ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस गैस एमिशन ताले एनवायरमेंटल लॉस हला कि नहीं एटी ताले हम कोन दरकार ये कहूची ग्रोथ हो बट एनवायरमेंटली सस्टेनेबल ग्रोथ विदाउट हैम्परिंग द एनवायरमेंट बा में रिसोर्स यूज करबा मु रिसोर्स रो कथा कहबी रिसोर्स यूज करबा रिसोर्स की यूज करबो ना करंट जनरेशन सब रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करबो करंट जनरेशन कोन करबो exploit करिवो all resources impact पड़िवो कहां पर ना impact पड़िवो फ्यूचर जनरेशन ऊपर impact पड़िवो कहां पर impact पड़िवो फ्यूचर जनरेशन ऊपर यानी तांको पई यूज रिसोर्स को रखबो यूज करिया सब रिसोर्स हमें यूज कर देथिया तले आ गोटे कथा कहूची ए रिसोर्स को यूज करूची के को मान को द्वारा यूज होची रिच ना पोर रिसोर्स यूज करते रिच अर्बन लोक ना रूरल लोक अर्बन डेवलप्ड कंट्री ना अंडर डेवलप्ड कंट्री बट इंपैक्ट पड़ुची कहां ऊपर ग्लोबल वार्मिंग रो क्लाइमेट चेंज रो धनी लोक पाखे तो एसी अछि गरीब पाखे नहीं सो इंपैक्ट पड़ुची पोर ऊपर अर्बन एरिया लोक एसी लगे दुनी इंपैक्ट कहां पर पड़ुची रूरल लोक ग्रीन हाउस गैस एमिशन अधिक कहां पे रिच पे अर्बन पे डेवलप्ड कंट्री पे इंपैक्ट अधिक कहां ऊपर अंडर डेवलप्ड ताने मते कहले एठी एको क्रिएट कला किए कारण कॉज कहा ऊपर एवं इंपैक्ट कहा ऊपर सृष्टि कला गोटे लोक किए कहली सृष्टि एको कला गोटे लोक रिच कले अर्बन लोक डेवलप्ड लोक कले इंपैक्ट पड़ला कहा पर ना पोर रूरल एवं अंडर डेवलप मते कोन एठी जस्टिस वायलेशन हलानी राइट वायलेशन हलानी एको पिले कह जाय क्लाइमेट जस्टिस लेखिक रखन सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस पढी चंदी समस्ते
पॉलिटी रे आ गोटे नुआ शब्द कहूँ लिखिक रखु क्लाइमेट जस्टिस क्लाइमेट बा एनवायरमेंटल जस्टिस बुझी पारे मो कथा एई मानंक पाई एमानंकर राइट्स वायोलेशन हैला रिच अर्बन डेवलप्ड लोक मानंक पाई पोर रूरल एवं अंडर डेवलप्ड लोक मानंकर राइट्स वायोलेशन हैला एवं वर्तमान जनरेशन लोक मानंक पाई फ्यूचर जनरेशन राइट्स वायोलेट हैला आ गोटे पॉइंट ऐड कर दवा करंट जनरेशन लोक एपटला फ्यूचर जनरेशन लोक दी जनकर राइट्स वायोलेट नेक्स्ट इक्विटेबल डेवलपमेंट इक्विटेबल डेवलपमेंट माने कोन कीपिंग एन आई ऑन द ऑल दी सेक्टर्स रूरल अर्बन किछ नै सबु सेक्टर रो डेवलपमेंट हो कोन कहली सबु सेक्टर रो डेवलपमेंट हो ऑल सेक्टर्स येला नीति आयोग रो ऑब्जेक्टिव आउ कोन नीति आयोग रो ऑब्जेक्टिव ये स्वामी विवेकानंद का आइडिया ऊपर बेस करची बेस्ड ऑन ह्यूमन डिग्निटी एंड नेशनल सेल्फ रेस्पेक्ट कहां पर बेस्ड ऑन ह्यूमन डिग्निटी एंड नेशनल सेल्फ रेस्पेक्ट नेशनल डेवलपमेंट आउ कहां पर ऑलराउंड सबु सेक्टर सबु प्रकार ऑल परवासिव यार अर्थ सर्वस्पर्शी समस्त को छुई जीव सर्वस्पर्शी होलिस्टिक होलिस्टिक माने सेम सेम सबु सेक्टर सेक्टर वाइज रूरल अर्बन प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सब ऑल इंक्लूसिव फॉर एवरीवन ऑल इंक्लूसिव फॉर एवरीवन देन आउ कोन इन दिस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट आउ कहा पर फोकस करछि देखिबा आउ कहा पर फोकस करछि ना अंतोदय अंतोदय अर्थ अंतोदय माने कोन टू सपोर्ट सर्विस एंड अपलिफ्ट पोर पोर मानकर डेवलपमेंट पोर मानकर डेवलपमेंट कहीं ना बिकॉज नथिंग इज मोर पेनफुल देन पॉवर्टी जो गरीबी हटाओ आमे कहूजे एक्चुअली गरीबी हटाओ कौन कहले ऑब्जेक्टिव कौन बा दरकार ना एक्चुअली गरीबी हटाओ बुझेला मो कथा ना नहीं गरीबी हटाओ कौन तो अंतोदय अंतोदयर अर्थ होची पोर मानकर अपलिफ्टमेंट येला नीतिश मॉडल ऑफ डेवलपमेंट आउ कौन ना इंक्लूजन इंक्लूजन कौन इंक्लूजन कौन करे कुछ ना लैंग्वेज एम्पावर द डिसएडवांटेज डिसएडवांटेज किए जो माने दलित जो माने दलित निष्पेषित कह जाउ जो माने को अवहेलित शोषित एक्सप्लॉइटेड नेग्लेक्टेड एई मानकर डेवलपमेंट रिलीजन धर्म विशेष धर्म ऊपर निर्भर करी जो माने माइनॉरिटी रिलीजन अछन लैंग्वेज जो माने लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी अछन इनइक्वालिटी जोटा जेंडर स्पेसिफिक इनइक्वालिटी अछि आपनकर वुमेन नै जानतु थर्ड जेंडर नै जानतु वुमेन दी प्रकार लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एंड रिलीजियस माइनॉरिटी वीकर सेक्शन को प्रोटेक्ट करिया कहूची देखो वीकर सेक्शन मस्ट बी मास्टर ऑफ देयर ओन फॉर्च्यून कोन मादर का मास्टर ऑफ देयर ओन फॉर्च्यून देन आउ का फोकस करना विलेज रूरल डेवलपमेंट कथा कहूची कौन कहूची ना रूरल डेवलपमेंट विलेज ऊपर फोकस करूची विलेज रा अपलिफ्टमेंट हवा कहूची प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट हवा दरकार विलेज पीपल्स पार्टिसिपेशन ताने समस्त पार्टिसिपेट कर दिस इज पॉलिटिकल जस्टिस बाको कहे डेमोक्रेसी democracy is all about participation of everyone so people's participation everyone's participation in decision making next is demographic dividend मते कहले demographic dividend कोन बहुत और कहि ए कहले मते demographic dividend कोन what is demographic dividend कोन demographic dividend कोन
15 to not 68, 65. Working population. यही बयस भर जो मैंने अच्छा यंग पॉपुलेशन कौन कहली यंग पॉपुलेशन नहीं तमाने एमानकर कंट्रीब्यूशन अधिक एमाने अधिक काम करि पारे कंट्रीब्यूट्स मोर टू प्रोडक्शन बा जीडीपी नहीं है डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूज करिया पड़छि राजा को हम ह्यूमन रिसोर्स को प्रॉपर्ली यूज करिया पई कहू गवर्नेंस व्हिच टाइप ऑफ गवर्नेंस दिस इज ऑल अबाउट गुड गवर्नेंस कौन कहली गुड गवर्नेंस सस्टेनेबिलिटी एटा कहली लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोएक्टिव गवर्नमेंट कौन प्रोएक्टिव गवर्नमेंट अर्थ होची गवर्नमेंट्स पार्टिसिपेशन बा गवर्नमेंट एक्टिव रहिबो सबले विजिलेंट गवर्नमेंट बा एठी पुलिस स्टेट एवं वेलफेयर स्टेट रो ड्यूटी डिस्चार्ज करी ड्यूटी टू बी डिस्चार्ज बुझ पाले मो कथा नेक्स्ट पॉइंट को आसीबा कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म कौन ये इंपोर्टेंट सब मन रखिए प्लानिंग कमिशन समय रे जेतले पॉलिसी फॉर्मुलेशन होउतला पॉलिसी फॉर्मुलेशन ने इन पॉलिसी फॉर्मुलेशन स्टेट गवर्नमेंट रो रोल कम स्टेट गवर्नमेंट रोल इज लेस बस स्टेट गवर्नमेंट रो रोल टा कम पॉलिसी फॉर्मुलेशन बुझ पाले मो कथा पूर्ण प्लानिंग कमिशन जो नीति आयोग आसिला जो स्टेट गवर्नमेंट रो रोल बढ़ी गला स्टेट गवर्नमेंट रो रोल कौन है ना इंक्रीज हो गला बुझ पाले मो कथा स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर कर दिया गला स्टेट गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड स्टेट गवर्नमेंट कौन है ना स्टेट गवर्नमेंट एम्पावर्ड हो गला पार्टिसिपेशन बढ़िला स्टेट गवर्नमेंट रो रोल बढ़िला इन डिसीजन मेकिंग इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन इंक्रीज्ड तो स्टेट गवर्नमेंट रो रोल बढ़िला किए नीति आयोग सेतमे आप कहते कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कौन कहली दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बा कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म कौन कहली कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कॉम्पिटिटिव कौन एठी कंपटीशन अब कहाँ कहाँ भीतर ना सेंटर स्टेट एंड स्टेट यांक भीतर कंपटीशन अब स्टेट रो बेस्ट फ्रेंड सेंटर कोऑपरेट करिवे एवं कम्पीट करिवे विथ इच अदर ना पॉजिटिवली माने कर गोटे इंडेक्स देखिवे वेलफेयर इंडेक्स रे को स्टेट केते भलो परफॉर्मेंस एग्जांपल नेबा ओडिशा डिजास्टर मैनेजमेंट लीडर सो अदर स्टेट्स दे विल लर्न फ्रॉम ओडिशा हाउ टू मैनेज डिजास्टर
एटा कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। सो ये कौन कहूँ ना, ये कहूँ सिस्टमैटिक इंटरेक्शन बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर। क्या भीतर सिस्टमैटिक इंटरेक्शन क्या भीतर बिटवीन स्टेट एंड द सेंटर, स्टेट और सेंटर भीतर ये सिस्टमैटिक इंटरेक्शन हवा दरकार। देन सेंटर शुड सपोर्ट स्टेट्स टू पार्टिसिपेट इन नेशनल प्लानिंग। कौन करो ये सेंटर कौन करो, सेंटर स्टेट मान को एनाबल करिवो नेशनल प्लानिंग रे पार्टिसिपेट करिया पाई। सेंटर कौन करिवो ना स्टेट मान को एनाबल करिवो नेशनल प्लानिंग रे पार्टिसिपेट करियो। इट शुड कम्पीट विथ ईच अदर, स्टेट माने कम्पीट करियो निज निज भीतर पॉजिटिव। सेंटर स्टेट सहित कम्पीट करियो एवं बाई डायरेक्शनल रिलेशन हो। पूर्व कौन थिला ना सेंटर टू इंस्ट्रक्शन आसुतला का पाक ना स्टेट पाक, ये को बाई डायरेक्शनल हो, बोथ विल पार्टिसिपेट विथ ईच अदर। आगुरु सेंटर कथा खाली स्टेट सुनथला, एबे स्टेट कथा भी सेंटर सुनियो। कौन कहली एबे स्टेट कथा भी सेंटर सुनियो। बुझ पाले मो कथा? इज दिस क्लियर? नेक्स्ट आउ कौन पॉइंट रहिला ना शेयर्ड नेशनल एजेंडा। Shared national agenda means between the center and the state, all are stakeholders. Center and state, all are the stakeholders here. Now, who is the state's best friend? Ke na state's best friend is center. State ra best friend ke na state's best friend is at center. Then is knowledge hub. Knowledge hub ki na center knowledge hub habo, knowledge spread karibo, research and development को गुरुत्व दिया जिवो। Research and development रा spirit बढ़ेइबो लोक मान को भीतर, people public भीतर बढ़ेइबो। कौन कहली स्पिरिट बढ़ेइबो लोक मान को भीतर। Decentralized planning, state level, district level, local level ले decentralized planning करियो, केमि समस्त पार्टिसिपेट करियो। आगर थिला खाली सेंटर रु डायरेक्शन फ्लो करूथिला, कोन होतला सेंटर रु डायरेक्शन फ्लो करूथिला, ये कुछ समस्त पार्टिसिपेट करिवे। बुझ पाले मो कथा ना नाही? देन हार्मोनाइजेशन, हार्मोनाइजेशन सेम कथा, सेंटर स्टेट बा स्टेट स्टेट यांको भीतर किछि डिस्प्यूट अछि त से डिस्प्यूट गुडा को रिजॉल्व करियो। मानकर दुई तीनटा स्टेट गोटे साइड रे आउ दुई तीनटा स्टेट गोटे साइड रे, तो ये कुछ डिस्प्यूट रिजॉल्व करियो, हार्मोनाइजेशन मेंटेन करियो। कहीं ना डिस्प्यूट कमिले मत कहूँ डेवलपमेंट स्पीड हम कि नहीं, डिस्प्यूट कमिले डेवलपमेंट स्पीड हम कि नहीं? यस, डिस्प्यूट कमिले डेवलपमेंट स्पीड हम। देन कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, जदि किछि कॉन्फ्लिक्ट अछि कोनोसी स्टेट मानक भीतर ताली कुछ कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करियो। कौन करो ये कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर। देन इंटरनल कंसल्टेंसी, कौन कहल देन इज इंटरनल कंसल्टेंसी। इंटरनल कंसल्टेंसी माने स्टेट भितर सेंटर स्टेट भितर इंटरनल कंसल्टेंसी। मु कहली ओडिशा टू डिजास्टर मैनेजमेंट अदर स्टेट माने सिखियो। सेमती इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तमिलनाडु कर्नाटक अदर स्टेट मानक टू ओडिशा सिखियो। मो कथा बुझी पाले? अदर स्टेट मानक टू ओडिशा सिखियो ए जगह। कैपेसिटी बिल्डिंग, मत खाली कोन गोटे टर्म कैपेसिटी बिल्डिंग रो अर्थ कोन? व्हाट इज कैपेसिटी बिल्डिंग? कैपेसिटी बिल्डिंग रो मीनिंग कोन? स्किल डेवलपमेंट करिवो। कौन करिवो कहली एठी? स्किल डेवलपमेंट करिवो। कैपेसिटी बिल्डिंग माने
सेक्टर नहीं, स्किल डेवलपमेंट जन को स्ट्रेंथेन करिवो सिंपली स्टेट गवर्नमेंट को करो बा लोक मान को करो then role of government be pro people agenda for the people by the people of the people for the people by the people of the people pro people proactive government এটা অলরেডি কই সারছি गवर्नमेंट proactive এই কাম করিयो participative समस्त participate all माने के स्टेट एवं सेंटर then empowering inclusion transparency ये सब बढ़ेयो empowerment करियो inclusion करियो समस्त transparency बढ़ेयो देखिए what are the reforms initiated by NITI Ayog फर्स्ट आसला कना ATL अटल टिंकरिंग लैब ये कुछ स्कूल मान करे क्रिएटिविटी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी बढ़िया पई आसीबो 500 लैबोरेटरीज यस ज्योति ठीक हो प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्किल नॉलेज अटल टिंकरिंग लैब ATL को आला को देन अटल इनक्यूबेशन सेंटर ये कौन करने स्टार्टअप मान को ग्रो करिया पई स्टार्टअप मान को ग्रो करिया पई कोच मैन्युफैक्चरिंग ट्रांसपोर्ट एनर्जी ये सब को बढ़ाइयो कोच टू प्रोवाइड 10 crores एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर अटल इनक्यूबेशन सेंटर 10 कोटी आसला देन मेडिकल एजुकेशन को रिफॉर्म ये जो MCI थिला मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ये ताको स्क्रैप करिया पई कोच कोन कोची ताको स्क्रैप करिया पई कोच हैना एगो आ गोटे किछि नुवा रेगुलेटरी बॉडी आस कोन कोची ना आ गोटे किछि नुवा रेगुलेटरी बॉडी आस डिजिटल पेमेंट पई आनला कोन तमर जो भीम यूपीआई टास्क फोर्स ऑन पॉवर्टी एलिमिनेशन यार काम ना पॉवर्टी मेजर पॉवर्टी कॉम्बैटिंग एंड पॉवर्टी एलिमिनेशन सो ये कौन करिवो ना पॉवर्टी मेजर करिवो पॉवर्टी रिड्यूस करिवो पॉवर्टी मेजरमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव टास्क फोर्स ऑन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एग्रीकल्चर रे प्रोडक्शन बढ़िया कुछ मोर प्रोडक्शन ग्रीन रिवॉल्यूशन ईस्ट इंडिया को आनिबो कहीं ओरिजिनली ग्रीन रिवॉल्यूशन कोठी दिला एटा आइतला तुमरो पंजाब हरियाणा एवं वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ये को जेटा आनिबो कोठी ना ईस्ट इंडिया माने ओडिशा वेस्ट बेंगल ई सब राज्य लैंड रिफॉर्म माने समस्त पाखरे लैंड पहुंची पारिबो लैंड रिफॉर्म पर रेम्युनरेटिव प्राइस टू फार्मर्स लाइक MSP FRP को बढ़े मिनिमम सपोर्ट प्राइस FRP ये सब को बढ़े एड्रेसिंग फार्मर्स डिस्ट्रेस लाइक डबलिंग फार्मर्स इनकम को डबल करिया को ये चेष्टा करे हैला स्टेट परफॉर्मेंस को मेजर करिया पे डिफरेंट इंडेक्स हेल्थ को मेजर करिया को एजुकेशन को मेजर करिया को वाटर मैनेजमेंट को मेजर करिया पे कुछ डिफरेंट इंडेक्स आसी कौन कहला ये सब को मेजर करिया पे आसीबो डिफरेंट इंडेक्स ताले बुझेला हम कथा मेजर चेंजेस कौन कौन ना डाउट जोरते कौन एनी डाउट केतरा क्वेश्चन दो ताले अटल इनोवेशन मिशन इज सेट अप अंडर ज्योति क्लियर अन्य माने लुसी सतीश संकल्प राकेश विस्तार सस्मिता
समस्त कहे सतीश कहले अनंत नारायण नीति आयोग ओके नीति आयोग वाला नेक्स्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश नीति आयोग टू रिप्लेस नीति आयोग कौन पाई कहा रिप्लेस करने को समस्त प्लानिंग कमीशन बहुत बढ़िया लास्ट क्वेश्चन इंक्लूसिव ग्रोथ इन 11th प्लान डजंट इंक्लूड लास्ट क्वेश्चन जो भी प्लान हो चारटा ऑप्शन पढ़ला पर समस्त ठीक कर पारे इंक्लूसिव प्लान आ भीतर कौन इंक्लूड करू नाही लास्ट क्वेश्चन यस सरस्वती करेक्ट लुसी सतीश करेक्ट टिकली कैपिटल मार्केट फार्केट एटा कोड आसला ए कथा कोन से कहूची किछ कैपिटल मार्केट मनी मार्केट कथा प्लानिंग कमीशन नथिंग डिस्कस्ड ठीक अछि मते कोन बुझी पारले ना नाही सेशन जहाँ डिस्कस होची क्लैरिटी आसुची ना नाही ए टू जेड डिस्कस करती पूरा पूरा क्लियर क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करिवे प्रीलिम्स देबे ताले कोन पढिले आजिर क्लास रे हमें देखिले नीति आयोग एंड प्लानिंग हैला चलो ठीक अछि ताले आज पय एतिक थाउ पुनी काली अच्छा काली रो क्लास ता नहीं बिकॉज़ ऑफ सम पर्सनल प्रॉब्लम काली क्लास ता नहीं किछि काम अछि देन पुनी हमें कंटिन्यू करबा सैटरडे क्लास रहबा एज यूजुअल पुनी नेक्स्ट वीक रे क्लास कि नहीं रेस्ट ऑफ द टॉपिक जहाँ छी पढ़ी कि सार दवा मन रखंतु भूली जाउछन बेले बेले तो काली रो क्लास टी नहीं खाली काली परे पर दिन अछि ठीक अछि चलो टेस्ट पाई समस्त रजिस्ट्रेशन करेंगे एज यूजुअल कहली सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन थैंक यू गुड नाइट भूलू ना नो भूलिस ओके ठीक है चलो ठीक अच्छे ये सब डाउनलोड करना टेलीग्राम चैनल गुड नाइट